Look, here is snail. So, people who have seen the movie and remember it will probably find some interesting. So, we found a door open, so we went in. That's another hallway, and again, there is no debris. So guys, we have reached Bellam Caves. That is the parking over there, and we came then from that. बुद्धा का मूर्ति उधर है, हम एग्जिट के समय देखेंगे. And that is the snack bar. We can have some tea or snacks over there. That's Piali and Dojo. और सीधा सामने जो आपको दिख रहा है अहेड, वो होगा टिकट काउंटर. वहाँ से टिकट लेके हम आगे जाएंगे. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू द स्नैक बार, which would be very difficult to guess. Okay, we will have to go in from here. So there has been good rains over here because there is a lot of stagnant water. That's Piali focusing on getting her stuff in place. Tojo focusing on nothing. So make it 210. See now, give some discount. Your machine is not working. 20 rupees what? This is the entrance of Bellam Caves. So Bellam Caves actually, I think चित्रावती रिवर से बना हुआ था. इसका केव्स के अंदर इसका स्पेशलिटी है कि ये स्टैलेक्टाइट जो होता है उसका फॉर्मेशन इधर है, और जो रिवर है वो अभी नहीं है. ठीक है, तो अभी गुम हो गया वो रिवर. सो चलो अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं फिर. 3 children. In cave, everybody is children. No, thank you. So earlier there was only one skyline hole. Now I can see another one, which is this looks to be a new one, something that I had not seen earlier. And there were a lot of people last time. This time it's good. It's kind of empty. So we are going to see a very large underwater cave system, underground cave system, and we are also going to see this kind of potholes. And here you go. One example is here. This is not a pothole. This is the kind of a opening to the sky. बारिश के टाइम इधर पूरा पानी गिरता है. ठीक है, पूरा झरना जैसा. कोई आएगा तो पूरा भीग जाएगा. तो प्रेफरेबल रेनकोट पहन के आ जाओ इधर जाना है तो. पर बहुत बारिश जब गिरता है, पता नहीं इसके अंदर कैसे हो जाता है, क्योंकि पानी पूरा अंदर जाएगा केव के उधर. हाँ, वो वाटर इधर से जा रहा है. पहले हम लोग आए थे दिसंबर मंथ में. ठीक है, तो तब वाटर नहीं था, पूरा सूखा था. अभी थोड़ा थोड़ा भीगा भीगा है, तो केयरफुली विल गो. There's Saurabh. Tojo is taking nice photograph. Come, hold my hand. টর্চটা এখানে নিয়ে আসতে পারতাম. Bat. Lots of bats are there.
एक्चुअली केव है तो बैट्स तो इधर रहेगा। वो देखो पानी में वो लाइट गिरा है, कितना अच्छा लग रहा है। सो नाइस। ओके, ये केव है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट केव। पूरा बारिश के साथ आया ये। यस, ये वाला सब कीचड़। ऊपर দিয়ে যাস না, উপর দিয়ে নামতে পারবি না আর কোথাও, হয়তো যাই না উপর দিয়ে, যায় না নিচ দিয়ে। ऊपर दिए रास्ता। আসো। হ্যাঁ, উপর দিয়ে রাস্তা না, নিচে তো পুরো কাদা। सौरभ इज कमिंग। जब पहले आए थे ना इधर पूरा, तब ऊपर का रास्ता नहीं था, तब पूरा इधर ना पूरा ऐसे पत्थर पत्थर था। अभी शायद बना लिया ऐसे। बहुत ही सुंदर है। 4 years and so much of deposits have come. यस, বেশি উপর ওঠা না, এই সিঁড়ি দিয়ে গিয়ে। হ্যাঁ, ইয়েস। Look at the formation. ये नेचर का बनाया हुआ है कैसे ना। Now come, now oxygen are there because we are going more down, so उधर ऑक्सीजन के लिए बंदोबस्त है, जो ऊपर में दिखाया सौरभ ने कि ऊपर से ऑक्सीजन लेके नीचे भेज रहे, तो वही वाला। पहले बार जब आए थे तो इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, एक दूसरे को धक्का धक्का दे दे कर चल रहे थे। इस बार हम थोड़ा कम है। एक्चुअली आई थिंक दिसंबर महीने में आफ्टर मानसून इट विल कम मोर। चलो चलते हैं। दिस साइड, लेफ्ट साइड से सब गया, রাইট সাইড থেকে দেখলাম ব্যাক করলো লোকজন। এখানে ইন লেখা একটা জায়গা। কোথায় ইন? ও দিস ওয়ান ইজ আউট। দুটো জায়গা খুলে গেছে। ये ब्लैक कलर पूरा ग्रेनाइट हो गया ना,
पूरा एकदम हाँ पॉलिश पॉलिश हो गया. एंड ऑल्सो मे बी पीपल आर गोइंग सो टचिंग दिस. ওইখানে না নিচে এখানটা স্লিপারি আছে নিচে যাবে না নিচে যেও না, নিচে বন্ধ, কে বলেছে নিচে যেতে পারবে না, কেউ যাচ্ছে না ওই পাশে নিচে. Nobody is going. देखो light also not there. So नीचे हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बारिश के वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो गए. सो प्रेफरेबल दिसंबर मंथ में आया तो यू कैन गो डाउन ऑल्सो. ডিসেম্বর জানুয়ারি हाँ फरवरी. वीडियो में पिक्चर दे दे के हम लोग वीडियो बनाया था. इस बार आए वीडियो ले रहे पर नीचे नहीं जा पा रहे. एनीवेज ये देख लो, ये जो पाइप देख रहे हो ये सब ऑक्सीजन का है, भेजते हैं नीचे ऐसे, पर इस बार नहीं है. Then we are going back. We are going back because नीचे तो नहीं जा पाएंगे. उधर जाते तो स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट का पूरा नीचे जैसे बर्फ़ जैसा होता है ना, बर्फ़ का दीवार ऐसे वाला पूरा दिख पाते हैं. पर बैड लक. স্টারলাইট স্টারলাইট সব এর হয়ে গেছে. बहुत संभाल के जाना पड़ रहा है. এখানে শুধু গরমটা নেই, হিউমিডিটিটা একদম কলকাতার মতন. बहुत बहुत ही स्लीपरी. Go. Thank you. That is a very nice shot. लुक ये है, देखो इधर से ही देख लो थोड़ा जो मिल रहा है हम लोगों को. तो यू गाइस केयरफुल. The thing is, একটা দুটো জায়গায় রকটা ফট করে বেরিয়ে আছে হ্যাঁ উপর দিকে, আর ওইখানে অন্ধকার. আমি হাতটা দিয়ে রেখেছি সামনে. सो जो एक क्या मिले थे ना इधर, एक वेरी स्पीसीज मिले थे रेयर, उसको क्या किया वही तो पता नहीं. इतना बारिश में ऐसे सब कुछ तो ख़त्म हो गया. शायद उसको अलग कोई जगह पे मूव कर दिया. उस स्पीसीज का नाम मुझे पता नहीं है, पर you can see on Google. फिर दाঁড়াও আচ্ছা চলো এই চেক পয়েন্টে Why? Happy আছিস? না আঙ্কেল আছে তাই ওকে. হাঁপি যাচ্ছিস भाई बहुत गर्मी है. এখানে না একটু টর্চ দে, ইটস ভেরি ডার্ক. আমি যাচ্ছি এবার না না আমি দেখতে পাচ্ছি, আঙ্কেলের একটু রাখতে পারে.
तो चलो, we came back from there and then we will go from that side. क्योंकि सच में हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि कितना ब्यूटीफुल है ये नेचर का जो फॉर्मेशन है। माटी में चाहते हैं। यस, पर हम 2 टाइम आए थे इधर। एक तो अभी मानसून जस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइम प्री मानसून टाइम वी केम हियर। Wow, this we got. Look. Hello. Yes. It's fully cold. No, we cannot go further more because they are all gone. We can go there. They are totally blocked. जगह जगह लाइट दिया हुआ है तो इसीलिए अच्छा है। ये जो फॉर्मेशन है ये भी आप लोग देख पा रहे हो, हम देख पा रहे हैं, और लाइट की वजह से हम चल भी पा रहे हैं, नहीं तो बहुत तकलीफ होता। ये जगह है, जैसे ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता है। एट ए टाइम 1 person कैन गो। कि भेरी केयरफुल हेयर, हाँ एकदम তোকে দেখে শুনে আসতে হবে কিন্তু। ये देखो ऐसे है, मैं जाके पीछे तोजो का लेती हूँ कि तो फिर समझ में आएगा कि कैसे करके आ रहे हैं सब। 1 मिनट तोजो, आ जाओ अभी, कम। ये देखो कैसे करके आ रहा है, एट ए टाइम 1 person, और फिर भी ऐसे ऐसे करके आना पड़ रहा है। ये ब्यूटी है इसका। चलो कम। हाँ, सौरभ का तो एकदम फैंटास्टिक टी शर्ट कलर। सो गाइज ये रहा हमारी हालत। आई एम 5'7" और ये मेरा सिर टच हो गया सरफेस को। आई एम ओनली 4'10". सी 4'10" जहाँ and कहीं she पे has भी to ऐसे bend down. easily I can go. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। तो पियाली आपको केव तो दिखा रही है, मैं आपको केव में वॉक करने वालों का चेहरा दिखा रहा हूँ। Careful here. Yes, jutting rock. There you see above my shoulder. So this is Belem Caves, guys. This is a 3.9 or 3.5 kilometer cave system made by the underground river Chandravati. Chandravati river made this cave system 4000 BC. And we have reached a hallway over here. I will let Piali take the shots. I'm giving you a first person perspective. Okay. This is the Maya Mandir. That's the end. This hallway. See, all this surface that you see now, it was very, very clean, okay? What happened is, we had come here in 2021 December. Now, 2021 December we had gone to Darjeeling. We had come here in 2019 December. Okay. So what happened is, before 2019 December, for many years, there was no such kind of storm in this area
that water rushed in. After 2019, we had the Darjeeling landslide, we had the Sikkim twin landslide 1 year after the other. We had the hurricane coming out of Arabian Sea, and God knows how many more during the COVID times. Also during COVID times, daily or regular maintenance was an issue. So what happened is, the water has come in and it has seeped from the sides. It has flown across the walls and lot of clay deposits have happened. So you can look at the amount of clay deposits over here, and this is nothing. This wall you see of clay, it is about 2 feet high. This was not there. The entire wall was clean like this, and we have photographs to talk about it. And that's a fresh air vent. The fresh air vents have been upgraded since last time, but then all this is destruction. Okay, this is original. This is original. This is destruction. So that this entire channel got packed up with water to the extent that small stones and rocks did not sink, but they swirled up on the ceiling and created potholes over there. They will give you grip. Piale, not the pipe. পাইপের উপর পা দেবে পাইপে পা দিচ্ছি না, আরে যে স্লিপ খাচ্ছি, তুমি একটু এসে হেল্প তো করতে পারো। ডাঁট পড়ি। কাটছি কিন্তু তোমাকে আমি। পিয়ালি হাত দাও, এটা দিয়ে দাও, এবার হাতটা দাও। ওকে, আরাম সে। পুরো আটকে গেছে পা। See, the problem is, guys, we are afraid to dirty our shoes and wet our feet, and that is exactly where we fall. পিছনে রেখে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে, এখানে দাঁড়াচ্ছি। তো যে তোর হাত ফ্রি আছে, ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দে। থাকলে না আমি ফোনটা আলাদা করে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দে। পাচ্ছি না। So we are afraid to have our shoes in this state. See, such a clean shoes he has. She's dirty, mine's are dirty. So if we are focusing on protecting our shoes, sometimes we fall. Okay, wait, hold, don't go. No. Wait, Piali, we'll go this way. Wait, wait, wait. I am going down. There is stone over here. There is flowing water, which is not good news. So many people have left their chappals over here. Come. Hard. Right, left foot down. Right foot here. Slowly. Left. Right. Left down. Yeah. You're done. See, these guys are good, you know. You just need to be told how good they are. I really want to put my shoes into this water and clean them. पियली ने बोलो सब कुछ अंदर डाल दिया। Yeah, Piali is packed up. Her gimbal, her phone is all packed up. She shot the entire coming in. I am shooting the going out part. Easy, easy. Ma'am, easy, please wait. Thank you. This place is not something that you should rush or try to overtake. Cross. Careful of your head, Tojo. There you go. There you go. Beautiful, buddy. Amazing, man. And I am absolutely not satisfied আমি একটা ফটো চাই। coming here for the second time. তো जो So, okay, guys, let's continue. चल Piali just realized that she doesn't have too many single pics or none at all. So I
ahead and shoot their coming in through the gaps. This is the gap area. So that's where they are coming from. I will shoot their exit from this place by standing over here. That's the noise of the air vents. Out. There is another tight pass. Let me go ahead and shoot those lovely people coming down. There you can see. There they emerge is the right word. So भाई ये है आपका बेलम caves. We had seen 20%. This is this year 10%. Hopefully it will increase. It will get cleaned up. But still, even if it's less than what we saw last time, it's amazing. So the weather, climate inside is not warm, but extremely humid. So you see that channel chimney over there? We go down this chimney. Oh. Very difficult to. No problem, ma'am. Just face the wall. I will cover. Yeah. Please face the wall. Turn around. Either front either. Turn. Ah, perfect. Thank you. जगह कम है ना? Yo, so let Pierre and Tojo go. You'll get a perspective, and we'll also be able to see their rumps. Tojo, go ahead. Pierre, come behind. Yes. Now you can see both. Till now we were seeing only one. Two, Tojo and Gojo. Tojo and Gojo. So yeah, as I was saying, the temperatures are not very high, but the humidity is probably 110. There might be some condensation happening from the roof. I will bring my shoe there. I'll clean it outside. বাইরে আবার কাদা লাগবে ওখানে যাওয়ার সময় Yeah, I'll clean it outside because there will be light and air. Over here, Something smell is there. we'll be reaching that place where bats reside. So this is the animal that. smell. Yes. This is the bat smell. So even bats don't go all the way into the cave, right? They are at the first lighted area from the entrance. We will be going there, and that's why we can actually smell them. So much mud. All this place was clean rocks washed away by centuries of flowing river. It's all gone, man. Sab gaya. And this is not excavation mud. Excavation hasn't happened. I think Patal Ganga also. Patal Ganga might be like full of slush. Full of slush. So the Patal Ganga was, I think, 50 meters. I'll write it down on the screen. It is the deepest, lowest part of the cave system, and impressively deep inside. And as I said, 1.7 kilometer is open out of 3.9, and I think today we did 800 meters. Rest everything is closed. Today we did 800 meters, huh? Maximum. 800? Less than a kilometer. No. Not less than
kilometer to হয়ে গেছে 1 kilometer I think. I'm not saying going coming. No, only going only 1 kilometer we have done. Okay. Previously I think 3 kilometers, no? No. We did? 3.4 is the actual length of the cave. Hmm. 1.7 was open. Okay. That's why I'm saying that today we might have done less than a kilometer. Hey, those stones are looks like skull bones, man. So yeah, this is another pathway. ওইখানে না ওখানে গেছিলাম আমাদের বাড়িতে। So we are close to the exit. We have reached the first hallway after you enter. It humbles you, and this is nothing compared to what nature can do. Really, you can hold on to me if you need to. Huh? You can hold on to my t-shirt if you need to. I'm trying to be close to you. Okay. Here so I'm fine, but there I think. I'll just let Tojo and Piali walk down to give you a perspective of the size of this cave. And then we will see the volume and the force of the water. Okay? So that's Tojo, 6 feet. So this is easily 30 feet tall. Okay? And you have got potholes on the top. The rocks in the water were forced up against the ceiling because that was probably the closest surface. And due to the force, even on the sides, you get to see the potholes. There you are. So typically rocks are dragged by the river at the bottom, and then if there is a swirl, it starts revolving in one place and slowly it creates a pothole. So now, since we see potholes on the roof of the cave and the walls, we know that the rocks never had a chance to sink down, Yes. and they just came up, hit the roof, found a whirlpool, upside down whirlpool, and started their drilling work due to the swirling movement. Now, if that is a 5-foot high channel, we can understand, but these are easily 30 to 35 foot high ceilings where the potholes have been made due to the pressure. So you get the idea, my friend. Please continue. বলছিলাম ওই কাদা জায়গা থেকে বেরিয়েছে এটা তো বাচ্চা আমাদের কাছে এখন। Yes, so I was talking about a difficult crossing near the entry exit. So it's not that difficult. It's actually nothing. We just entered the caves and this was the first encounter, and hence we felt scared and worried and whatnot, but this was nothing. You guys might not even have noticed us crossing that place. That is where I was telling Piali to keep going ahead. So yes sir, Belem Caves, 4000 BC. It's going to be warm outside. Careful, this is slippery.